Now we solve question number 4 of practice set 7.2. Write the following statements using symbol of variation. नीचे स्टेटमेंट दिए हुए, आपको क्या करना है, सिंबल ऑफ वेरिएशन का यूज करके वो स्टेटमेंट लिखना है. First, the wavelength of sound L and its frequency F are in inverse variation. We write this statement using the symbol of variation. Here, wavelength is denoted by L and frequency F. Here in L and F there is a inverse variation. We write here L varies inversely with F. Here we write this statement using the variation sign. Question number 2. The intensity I of light varies inversely with the square of the distance d of a screen from the lamp. Here intensity I varies inversely with the square of the distance d of the screen from the lamp. We write here 1 upon d square. Here we write both the statement using the symbol of variation. Question number 5, 6 are reduced from your syllabus. For this start practice set 7.3. Question number 1 of practice set 7.3 is reduced from your syllabus this year. Now we will start question number 2. Question number 2 is, if 15 workers can build a wall in 48 hours, how many workers will be required to do the same work in 30 hours? एक वॉल को 48 आवर्स में बनाने के लिए 15 वर्कर की जरूरत होती है, लेकिन अगर उसी वॉल को 30 आवर्स में बिल्ड करना है तो कितने वर्कर की जरूरत होगी, ये आपको मालूम करना है. तो हम क्या करेंगे, पहले सपोज करेंगे. लेट ए रिप्रेजेंट number of worker building the wall and B represent time required. यह हमने सपोज करे कि नंबर ऑफ वर्कर के लिए ए लिए और टाइम रिक्वायर के लिए बी लिए. अब देखिए यहां पर अगर आपने
नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज कर दिए तो वॉल बिल्ड करने के लिए टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर आपने नंबर ऑफ वर्कर डिक्रीज कर दिए तो वॉल बिल्ड करने के लिए टाइम इंक्रीज होगा। यहां क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी इंक्रीज करने पर दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जा रही, और एक क्वांटिटी डिक्रीज करने पर दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो जा रही। तो कौन सा वेरिएशन है ये? इनवर्स वेरिएशन है। ये आपने पहचानना है, इनवर्स वेरिएशन है। तो यहां लिखेंगे हम द नंबर ऑफ वर्कर वेरीज inversely with the time required to build the wall. Here is the inverse variation between the number of worker and the time required. We write this statement symbolically: A varies inversely with B. Then we write this in equation form: A into B is equal to K, where K is constant of variation. Now, if 15 worker can build a wall in 48 hours, means here value of A is given to you 15 and time required is given to you 48, means B is 48. We write here, if A is equal to 15, then B is equal to 48. We put value of A and B here and we find the value of K. A is 15 into B is 48 is equal to K. So K is equal to, we multiply 15 and 48. 15 8s are 120. We write 0 here. 12 carry. 15 4s are 60 plus 12. It is 72. Means 720. Now we write the equation of variation. Equation of variation we put value of K here. A into B is equal to 720. Then how many workers will be required to do the same work in 30 hours? Here the time required is given to you, it is 30 hours. He told you find the number of workers, means here we want to find the value of A. If B is equal to 30,
then A is equal to question mark. We put value of B here. A into 30 is equal to 720. A is equal to 720 upon 30. This 0 and this 0 cancel. A is equal to 3 2 the 6. 1 remains here. It becomes 12. 3 4 the 12. Here value of A we get 24, means 24 workers are required to build the wall in 30 hours. 24 workers is required to build the wall in 30 hours. Here we complete question number 2. Question number 3 is 120 bags of half-liter milk can be filled by a machine within 3 minutes. Find the time to fill such 1800 bags. क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक मशीन है, वो क्या करती है? 3 मिनट में 120 बैग आधा लीटर दूध के भरती है. तो आपको मालूम करना है ऐसे आधा लीटर के 1800 बैग दूध के भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है. तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे यहां पर लेट ए रिप्रेजेंट नंबर of bags of half liter milk and B represent the time required अब यहां देखेंगे हम कौन सा वेरिएशन है. अगर दूध के आधा लीटर के बैग कम है तो टाइम भी कम लगने वाला है. तो क्या हो रहा? इफ द नंबर ऑफ बैग डिक्रीजेस, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द बैग इज डिक्रीजेस. इफ द नंबर ऑफ bags of half liter milk increase, the time required to fill the bag increase. It means that if one quantity increase, other also increase. If one quantity decrease, other also decrease. It means that there is a direct variation between the number of bags and the time required to fill it. So we write here the number of bag, the numbers of bags and time required to fill the bags
varies directly. Varies directly. Now write this statement in the symbolic form. There is a direct variation between the number of bags and the time required to fill the bag. We represent number of bag by A and the time required by B. So we write here A varies directly as B. We write this in equation form. A is equal to KB, where K is constant of variation. K is constant of variation. Number of bag we represent by A. Here value of A is 120. Time required for this is 3 minutes, means B is equal to 3 is given to you. We write here if A is equal to 120, then B is equal to 3. We put the value of A and B here. A is 120 is equal to K, B is 3. K is equal to 120 upon 3. K is equal to 40. The equation of variation, we put value of K here. A is equal to 40B. He asks you find the time to fill such 1800 bags. ऐसे 1800 बैग्स को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा आपको मालूम करना है. If A is equal to 1800, then B is equal to question mark. We put value of A here. 1800 is equal to 40B. B is equal to 1800 upon 40. B is equal to 0 0 cancel. We divide 180 by 4. 4 is 16. 2 remains here. It becomes 20. 4 5 is 20. Here 45 minutes required. We write answer here. 1800 bags of half liter milk can be filled by a machine within 45 minutes. Here we complete question number 3. Question number 4. A car with speed 60 km per hour takes 8 hours to travel some distance. What should be the increase in the speed if the same distance is to be covered in
7.5 hours। क्वेश्चन क्या है? एक कार है, उसकी स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर है तो वो 8 आवर्स में सम डिस्टेंस क्या करती है? कवर करती है। लेकिन अगर वही डिस्टेंस 7.5 आवर में कवर करना होगा तो कार की स्पीड कितना इंक्रीज करना होगा यह आपको मालूम करना है। तो सपोज करेंगे यहां पे हम, लेट वी रिप्रेजेंट द स्पीड of car in kilometer per hour and T represent the time required। अगर आपने कार की स्पीड इंक्रीज करे तो डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम डिक्रीज हो जाएगा, और अगर आपने कार की स्पीड डिक्रीज करे तो डिस्टेंस कवर करने का टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां क्या हो रहा? एक क्वांटिटी इंक्रीज करे तो दूसरी डिक्रीज हो जा रही, और एक क्वांटिटी डिक्रीज करे तो दूसरी इंक्रीज हो जा रही। मतलब कौन सा वेरिएशन है यहां पर? इनवर्स वेरिएशन है। तो यहां लिखेंगे स्पीड ऑफ कार वेरीज इनवर्सली एज द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर a distance। Here the inverse variation between the speed of car and the time required to cover the distance, we write it symbolically, V varies inversely with T। Now we write this in equation form, V into T is equal to K. K is constant of variation a car with a speed 60 km per hour takes 8 hours to travel some distance। Speed of car is given to you 60 km per hour, means V is 60 km per hour and the time required T is 8 hours। We write here, if V is equal to 60 then T is equal to 8। We put these values here, 60 into 8 is equal to K, so K is equal to 8 zeros are 0, 8 6 are 48, 480। The equation of variation we put value of K here, V into T is equal to 480,
then he asks you what should be the increase in the speed, कार की स्पीड कितना इंक्रीज करना पड़ेगा अगर उसी डिस्टेंस को 7.5 आवर में क्या करना है, कवर करना है. इफ t इज इक्वल टू 7.5 आवर मीन्स 7.5, then how we find how many speed will increase? First we find value of v and we subtract the previous speed by the second speed, we get the increase in speed. अब हम क्या करेंगे, पहले यहां पर स्पीड मालूम करेंगे, कितनी स्पीड आएगी v मालूम करेंगे. v मालूम करने के बाद क्या करेंगे, हम पहली स्पीड को बाद की स्पीड में से माइनस करेंगे तो उतना इंक्रीज करके आ जाएगा वो. Then v is equal to question mark. We put value of t here, v into 7.5 is equal to 480. V is equal to 480 upon 7.5. It is v is equal to 480. We write 0 here, it becomes 75. Now we divide 4,800 separate by 75. 5 ones are 5, 2 remains here, 5 5s are 25. 5 9s are 45. 3 remains here, it become 30. 5 6 are 30. 15 ones are 15. 15 6 are 90. 6 remains here. 15 4s are 60. Value of v is 64 किलोमीटर पर आवर. देखिए यहां पर पहली स्पीड कितनी है उसकी 60 है, बाद में कितने करना पड़ा, 64 करना पड़ा, मतलब कितना इंक्रीज करना पड़ा, 4 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करना पड़ा. तो यहां लिखेंगे हम increase the increase in speed of car the increase in speed is equal to 64 minus 60 is equal to 4 kilometer per hour. We write the answer here. The increase in speed of the car, the increase in speed of car is 4 kilometer per hour. Here we complete question number 4 of practice set 7.3, and also we complete chapter number 7 variation here.